Hello and welcome to everyone to my channel Blue Chip Finance. In this video, we are going to continue our previously started chapter Rectification of Errors. And in this video, we are going to discuss one more question related to rectification of errors. So question is that the trial balance of Mr. Ishtiaq did not agree. The accountant transferred the difference to the suspense account and subsequently detected the following mistakes. Return of goods to a supplier, Shabir, for rupees 4,000 has not been posted to his account. So first of all, we rectify this mistake and what is the correct entry of returning of goods to a supplier Shabir for rupees 4,000. So that is purchases return. So correct entry is that Shabir to purchases return 4,000. So what is the problem now? Has not been posted to his account, and so problem is in the account of Mr. Shabir that this amount is not posted to his account. So in correct entry, Shabir must be debited. So we simply just place Shabir into debit, and in credit we just place suspense account and amount is 4,000. The next entry is that interest received rupees 4,800 though entered in the cash book was not posted to the relevant income account. So what is the favorable account of interest? So that must be credited because interest is your revenue and the favorable balance of interest is credit. So we just place interest in the credit, and in debit we place suspense with 4,800. So suspense account to interest account 4,800. Third entry is that purchase return to Malik Shakil rupees 6,000 have been wrongly entered in the sales return book. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है जी? परचेज रिटर्न टू मलिक शकील रुपीज 6,000. सो करेक्ट एंट्री बनती है जी मलिक शकील टू परचेजेज रिटर्न have been wrongly entered in the sales return book. तो ये यहाँ पे आपका अकाउंट ही गलत आ गया कि आपने एंट्री कर दी सेल्स रिटर्न. तो सबसे पहले तो आप देखें कि परचेजेस रिटर्न जो है वो किधर आना चाहिए. तो वो लाजमी बात है, मैंने पहले भी वीडियोस के अंदर आपसे डिस्कस की है ये बात कि ऐसी एंट्रीज़ के अंदर सबसे पहले जो करेक्ट एंट्री है उसको देख लें कि उसका जिस अकाउंट में प्रॉब्लम है वो किधर आना चाहिए. तो करेक्ट एंट्रीज की बनती है मलिक शकील टू परचेजेस रिटर्न. तो परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट होना चाहिए. तो सबसे पहले तो 6,000 के साथ परचेजेस रिटर्न को आप कर दें क्रेडिट. उसके बाद देखें कि मिस्टेक क्या है. मिस्टेक है हैव बीन रॉन्गली एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक. यू रॉन्गली एंटर्ड इट इन सेल्स रिटर्न बुक एंड यू डिड द एंट्री that sales return account to Malik Shakil. So you debited wrongly here. So just take the opposite side of sales return book, और sales return book जो है वो आपकी credit हो जाएगी, यानी कि आपने cancel कर दिया है. So you cancelled sales return. So sales return favorable balance is debit, and when you cancelled it, you must place in the credit side. With 6,000, and in opposite account Malik Shakil will be debited with 12,000. Next entry or next problem is that an amount of rupees 7,680 which was to be debited to Shumaila's account wrongly debited as rupees 7,860. यानी कि शुमाइला का जो अकाउंट है वो 7,680 से डेबिट होना चाहिए था. आपने किया तो डेबिट ही, यानी अकाउंट की मिस्टेक नहीं है. आपने अमाउंट गलत लिख दी, यानी कि आपने 7,860 लिख दिया इंस्टेड ऑफ 7,680. तो ओवरकास्ट का प्रॉब्लम है. तो ओवरकास्ट जब भी होता है, प्रीवियस वीडियोस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं जी,
अकाउंट को चेंज करते हैं। तो अकाउंट शुमाइला का डेबिट हुआ था तो हम उसको कर देंगे क्रेडिट, और ऑपोजिट में सस्पेंस लिख के जितना भी डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम वहाँ पे मेंशन कर देंगे। ओवर कॉस्ट के अंदर याद रखिए हमेशा आप अकाउंट को ऑपोजिट करते हैं, अगर डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे, अगर क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे। ₹14,000 पेड फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर वाज चार्ज टू द बिल्डिंग अकाउंट। आपने परचेज किया फर्नीचर, तो फर्नीचर टू कैश करना था, जबकि आपने कर दिया बिल्डिंग टू कैश। तो सिंपल है, जो करेक्ट एंट्री है उसके अंदर फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था तो डेबिट में लिख दें, और जो आपने मिस्टेक की उसको ऑपोजिट कर दें, यानी कि आपने बिल्डिंग अकाउंट लिखा था डेबिट में, उसको उठा के आप क्रेडिट में लिख दें, तो वो कैंसिल हो जाएगा 14,000 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम, ₹16,000 बीइंग वेजेस पेड डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट ट्वाइस। आपने वेजेस को पे किया, डेबिट भी ठीक किया, वेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट बनता है इसकी एंट्री, एक्सपेंस है चूंकि आपका, एंड एक्सपेंस मस्ट बी डेबिटेड बिकॉज फेवरेबल बैलेंस ऑफ एक्सपेंस इज डेबिट। सो ₹16,000 बीइंग वेजेस पेड डेबिटेड, सो डेबिटेड ही होना था, यहाँ पे डेबिट ही होना था, लेकिन आपने ट्वाइस कर दिया, 2 दफ़ा। तो आप क्या करेंगे जी, आप वेजेस को 16,000 के साथ क्रेडिट कर देंगे, यानी कि आप एक दफ़ा की जो वेजेस आपने 32,000 इनफैक्ट आपने लिखी हुई है डेबिट में, तो सिंपली 16,000 कैंसिल कर दें, क्रेडिट कर दें 16,000 के साथ, और ऑपोजिट में सस्पेंस। तो ये थी जी इस पेपर की एंट्रीज। Now we are going to make suspense account. So the trial balance of Mr. Ishtiyaq did not agree. The accountant transferred the difference to the suspense account and subsequently detected the following mistakes. तो अब क्या करेंगे जी हम? पहली बात तो ये है कि हमें बैलेंस उन्होंने नहीं बताया। यहाँ पे बैलेंस आमतौर पे मेंशन होता है, तो बैलेंस हमको नहीं मालूम क्योंकि उन्होंने नहीं बताया इसमें। तो सबसे पहले तो हम सस्पेंस की एंट्रीज लिख लेते हैं। इसके अंदर बाय शबीर आ जाएगा क्रेडिट में 4,000 के साथ, तो बाय शबीर क्रेडिट में 4,000 के साथ आ गया। उसके बाद सस्पेंस टू इंटरेस्ट 4,800, टू इंटरेस्ट 4,800। उसके बाद आ गया जी सस्पेंस टू शुमाइला 180, टू शुमाइला 180। उसके बाद आ जाएगा सस्पेंस टू वेजेस 16,000 के साथ, टू वेजेस 16,000 के साथ, और जो डिफरेंस आ जाएगा वो आपका ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस है 16,980। तो ये था जी आज का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें मज़ीद जो डिफरेंट पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के, उनको हम डिस्कस करेंगे। Till then, Allah Hafiz, take care of yourself and other persons around you. Thank you.